Hi, this is Shubhayan Chakravarti and welcome to Red Sports Domestic Adda. I am joined by Joydeep Mukherjee and Kaushik Kashyap to preview the big finale between Mumbai and Himachal Pradesh. It has been a sensational tournament, some great matches, some great performances, but now it's time for the big grand finale. Joyda, Himachal Pradesh, they have become a winning machine. Mumbai, both are in fact the first timers in this Syed Mushtaq Ali Trophy final. So, what are you expecting from this match? Yeah, I had actually picked Himachal over Punjab to win this, if you Ye- remember in our last this thing, Yes. because I feel even in T20 cricket it's about consistency. See, if Right. Shubman Gill comes and gets a 55 ball 125, then they'll take the game away. But the Right. chances of that happening is once in 20 days, and that's happened Right. 2 days back. So I don't Right. think Punjab is as concerned. We'll come to that later. But this is Mhm. again even in this game. I know on paper Mumbai is ahead, but I wouldn't put it past Himachal because they do. They are not so dependent on individual performances. They are not so dependent on blinders from people. They are not dependent on special things happening. They just do normal things every day. Right. Right. So Right. always in the history, if you see, those are the teams. Why is New Zealand the only team that has made it into the World Cup semi so far? Who do they have? Right. 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 I So mean, this yeah, cricket, that's with all the yeah. slam bang that you have, it's still about consistency. It's still about doing the basics right, and that's why Himachal. I mean, last year Vijay Hazare champions. This year in the finals of the Syed Mushtaq Ali, and the first two games of the tournament in were washed out, and yet Yeah. how good are they? In fact, I interviewed two of Himachal's star player Akash Vasisht and Vaibhav Arora today. The interview with Vaibhav Arora is already published, and both of them have spoken about why Himachal Pradesh is such a good side, like a good winning machine in this domestic circuit, why they have become, and what sort of ingredients they have in this team to get those results, big results with limited resources. And you guys should check out the interview with Vaibhav Arora because that is already published. Akash Vashisht will be done in half an hour or so after the domestic Adda gets over. But Kaushik, Himachal Pradesh versus Mumbai, what are you expecting from this match? You did individual players preview today this morning, so those who are watching this video can check that out as well. But Kaushik, in general, what are you expecting from this match? क्लोज मैच होना चाहिए आई थिंक इट Mm. विल गो डाउन द वायर एज last year also we saw how it was the final and all the knockout game has gone down the wire so far True. except Mumbai game. Mumbai won it convincingly. All kudos to Shreyas Iyer and Snock. But yeah, about Yep. Himachal जो जॉय सर ने वो पहले शो में ही बोला था वो एक्सपीरियंस कम्स ahead of everything Mm. and जो team work है and consistently carrying the basics with them and clear roles दिखने को मिला है हमको clear roles हर player को दिखने को मिला है कौन finishing करेगा कौन क्या करेगा कौन wicket लेगा सब clear roles दिखने को मिल रहा है and they are executing very well. Absolutely, and Joyda, I even spoke to Mayank Dagar today, and I guess, showed him the snippet where you said that Mayank Dagar's bowling and Akash Vashish batting, or Akash Vashish batting and Mayank Dagar's bowling in combined they would become far better players together in general, and they both agreed to the fact that it's still work in progress. Himachal are not a finished side altogether, but the kind of consistency. I mean, you said it earlier in the show as well. We saw that against Punjab, Akash Vashish. Sumit Verma against him again impressive. He has been on and off in this tournament, but showed what he's capable of. Akash Vashisht continued his good run, 43 runs. Then Pankaj Jaiswal, like the experience and everything, the all round show. I mean, they are looking like a compact unit who can go to the ground and say, "Koi bhi team ho, hum log hara sakte hain." True, for Mayank, he's doing the job for Himachal. The statement I made was more about them individually. What if they have to Yes, become a yes, Shabazz and play in an IPL team? right. For that, I can't think of any one left arm spinner who's playing in the team just as a bowler. Sai Kishore has just played a True. few games. But you name me in the Mhm. last 5 years of IPL, only one left arm spinner like Murli Kartik used to back in the day, like Pragyan Oja used to back in the day. You can't name me one left arm spinner who's just playing because of his left arm spin. He's got to be able to bat. True, true, Okay. So true. so individually speaking, that's what we needed Mike and Akash to do because then that enhanced their career. They're doing the job for Himachal Mhm. because Himachal, the biggest plus point about Himachal is that they have
about 8 or 9 or 10 players who can win you the game Mhm. with their own small contributions. Whereas in Right. Bombay, I look at Prithvi, I look at Yashashvi, I look at Shreyas. Shreyash, Dubey, okay, some with the ball, Mhm. 5, 6. So sometimes what happens is when you're Shreyash Iyer and you're in every Indian team that's come out, or 3 out of the 4 teams, this is more of a showtime Right. instead of Akash versus this is make or break. Mhm. उनमें फर्क है. Right. Right. एक है मैं दिखाता हूँ मैं क्या हूँ, Mhm. और एक है यही है एक मौका जिससे मेरी जिंदगी बदल Mhm. सकता है. श्रेयस अय्यर की Right. जिंदगी बदल चुका है. हाँ, अभी जो न्यूजीलैंड obviously. जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, केकेआर का Mhm. कप्तान है. तो वो जिस Mhm. स्टेज के लिए हम लोग ये तड़प रहे हैं वो ऑलरेडी उधर है. ये इंडिया के लिए खेल रहा है. Right. That Right. doesn't mean he doesn't want to do. He will equally want to do it. But at the Mhm. back of their mind, the pressure is not as much as it is for Nakash, all these Himachal players. Except Right. Rishi Dhawan, nobody's playing IPL properly. So Right. so properly, this is a chance, and Right. everybody will notice. Tomorrow is a day that could change their lives forever, forever. Right. You play Right. here. I mean, Shabazz is an example. I go back to him because I've seen him in front of my own eyes. Struggling to make the team, getting 1,500 runs, 70 wickets in club cricket. Just, just sir, एक chance. Look at he's in the Indian team, and in 3 years, 4 years, not that 15 years. Yeah. 3 years since those days. He made his So debut in 2018-19 season. Yeah. exactly, and 2 years Mhm. of COVID, 3 years of COVID, and 2 years Yeah. of COVID, and all that there. I'm just saying for him. Can you imagine tomorrow somebody gets a 47 ball 84 against Bombay? One IPL time picks him. He plays there for 4 games. There gets a 30 ball Mhm. 60. His life is changed forever. Forever. True. Tewati has I been playing completely for agree. so many years. How has his life changed? How has Sanjay Sheldon Samson? Cottrell 5 6. Yep. So you will only get there if you get the opportunity. But to get the opportunity, you have to do this now. This Yeah. is where Yashashvi already has it, Prithvi already has it, Shreyash already has it, Dev Dubey also already has it. That doesn't mean they're not going to try. They will try as much. But I'm saying what they have individually to gain from this is different. 100%, completely second दैट. कौशिक, मैं तुम्हारे पास आता हूँ. सुमित वर्मा का नाम तुमने बिल्कुल पहले दिन से लिया था हमारे पहले डोमेस्टिक अड्डा से कि स्पेशल प्लेयर है, मैच जिता सकते हैं, गेम चेंजर है. तो अब जब सेमीफाइनल जैसे स्टेज में आके वो एक हाफ सेंचुरी लगा रहे, वो भी पंजाब जैसे साइड में, जहाँ पे जोयदा ने इतने हमारे पिछले डोमेस्टिक अड्डाज में भी बोला है कि मैक्सिमम मोस्ट नंबर ऑफ आईपीएल प्लेयर्स उस पंजाब टीम में है. उनके अगेंस्ट आके इतना बड़ा शो दिखाना, कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा उनको फाइनल से पहले. हाँ, वो हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड दैट इज हम्म. ऑल्सो इक्विवेलेंट टू आप सक्सेस ज़्यादा मिलता नहीं है. इफ यू सी नंबर्स, एज जॉयदा सेड इन द प्रीवियस शोज, नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग. ही इज प्लेइंग द हाई ट्रू. रिस्क क्रिकेट फॉर हिज टीम. ही हैज अ रोल, एंड वो रोल काम कर गया व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट इन द सेमीफाइनल. सो ट्रू. जो फायर पावर है मिडिल ऑर्डर में, जो अभी हमको देखने को मिलेगा शाम थूलानी के अगेंस्ट, ही हैज टू फेस शाम थूलानी. So हम्म. and also those pacers जो रहानी यूज करते हैं बीच बीच में, अमन हकीम का एक ओवर डलवा दिया, दुबे का एक ओवर. हाँ. So this is a very important phase, and then you will have a Nikhil kind of player, Nikhil Kanta kind of हम्म. player. So एक साथ मिलके वो मिडिल ऑर्डर में जो एक मोमेंटम है वो कैरी आउट करना पड़ेगा, एंड एक स्टेज बनाना पड़ेगा. लेटर आकाश वशिष्ठ कैन डू व्हाटएवर ही कैन डू, ही हम्म. हैज डन सो फार. सो राइट. हाँ, सुमित वर्मा वही ऑन एंड ऑफ रहे, बट इंपॉर्टेंट स्टेज में मोमेंटम मिला, वो कैरी आउट करके, एंड आई एक्सपेक्ट हिम टू डू वेल इन द फाइनल एज वेल. और ये ऑन बट एंड जो ऑफ वाला हाँ. ये ऑन एंड ऑफ वाला ही गेम है T20. अगर हाँ. आप इधर के एग्जैक्टली. किसी को बोलोगे कि खाली ऑन रहो ऑफ का सोचो मत, तो the team will come down because the strike rate will come down, the runs will go up, the average will go up, but the strike rate will come down. Yes. Now one day राइट. we'll talk about Bengal, but if you see Bengal, you look at the strike rates, you look at the strike rates of the top 5 batters. Yes. It'll give you the reason why Bengal का bowling, शाबाज, और लास्ट मैच में ऋतिक रॉय चौधरी और अग्निव पंत की हिटिंग के लिए आप आसपास पहुंचे. बिल्कुल 80-90 बिल्कुल. के स्ट्राइक रेट में कैसे खेलोगे? तमिलनाडु And as well. also with Sumit, no, even the previous games, you see the group stage Yes. games also. You look at the strike rates, हम्म. not good enough, just not good enough. ना, अब इन सुनील, T20 फॉर्मेट चार चार बैट्समैन नहीं हो सकते, चार एंकर्स नहीं हो सकते आपके टॉप 4 में. अभी डेविड वार्नर रन नहीं बना रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन वो हम्म. 25 बॉल खेल के 17 नहीं कर रहा है.
हम्म, वो आज भी चल रहा था, आउट हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज कोई ना कोई कर देगा। इसमें क्या है, 120 बॉल का खेला है और 8 बैट्समैन है। 8 बैट्समैन, अगर एक बैट्समैन ने अगर 30 बॉल खेल लिया तो दूसरा बैट्समैन का 20 बॉल खेल लिया, वो जो 20 बॉल में 40 बना सकता है। तो करो या मरो 100%, इसमें, इसमें करो या मरो 100%, इसमें। वन डे वाला, डेज तो छोड़ ही दो, डेज में कंप्लीट ऑपोजिट हो जाता है। इवन वन डे में, इधर में इफ इट्स नॉट योर डे, गेट आउट, गेट रन आउट, गेट हिट राइट, विकेट, व्हाटएवर, राइट, बिकॉज यू आर ईटिंग अप टाइम। वो वक्त आएगा नहीं वापस। समटाइम्स यू विल सी 150 फॉर 4 20 ओवर्स, हमने 30 बॉल में 32 किया, और पीछे में देर जिसका लग रहा था उसको 7 बॉल मिला, किसको 9 बॉल मिला, जो 7 बॉल में 17 है, कोई 9 बॉल में 18 है, लेकिन उसको 7 बॉल मिला। उसको 27 बॉल देते तो मैच जीत जाते, 180 करते। दिस इज व्हाट, राइट। दिस इज वेयर द मिक्स इज। जॉयदा, एक सवाल आया है हमारे हमारे एक जी, दर्शक से, वरुण गिरी उनका नाम है। जी, मयंक डागर वर्सेस श्रेयस अय्यर एक्साइटिंग होने वाला है। लाइक इस बैटल को आप कैसे देखते हो? क्योंकि मयंक डागर अच्छे फॉर्म में, श्रेयस अय्यर हमें पता है कि स्पिन बैशर है, वो स्पिन जब देखते हैं तो उनकी आंखें चमका जाती है। एक चीज तो गारंटीड है, इट विल क्रैक दिस वे और दैट वे। Either Mayank will हाँ। go for a few or will get him out. But all depends on the scenario. You know, cricket is such an intriguing game, and 40 साल तो इसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी कौन पहले बैटिंग कर रहा है, कितना रन उन्होंने बनाया। अभी अगर 200 बना दिए हिमाचल पहले बैटिंग करके, तो मयंक अगर एक चीज होगा। अगर पहले मुंबई बैटिंग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं 180 बनाएंगे, 170 बनाएंगे, वो दूसरा बात होगा। अगर हिमाचल ने पहले बैट करके 140 में निपट गए, तो वो दूसरा बात होगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ द मैच पैन्स आउट। बट मुझे ये भी लग रहा है कि श्रेयस अय्यर इज द सॉर्ट ऑफ प्लेयर लाइक शुभमन गिल। जिस दिन उसने 55 बॉल में 100 किया, जब आप थे ग्राउंड पे शुभमन, इट डजंट मैटर हु बोल्ड, इट वाज हिज डे। तो श्रेयस अय्यर के दिन भी आ गया तो हिमाचल का खत्म है। बट वो दिन आएगा या नहीं, अभी तक तो आया नहीं है एक भी मैच में। और ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज ही श्रेयस अय्यर वो जब मर्जी ला सकता है, ये भी नहीं है। ये तो भगवान भी नहीं कर सकता। लास्ट मैच में अच्छा, हालांकि अच्छा हाफ सेंचुरी मारा था उन्होंने विदर्भ के अगेंस्ट। काफी सारे शॉर्ट बॉल्स भी खेलने को मिले थे No, उन्हें no. वहां पे। No. I am saying that he doesn't have this form and the runs at his beck and call. हाँ। अच्छा, आज फाइनल है, आज मैं 100% करूंगा। He cannot say that and go at a 140 strike rate because it's a game of cricket. अगर वैसे ही था तो अभी पृथ्वी को देखो, you know, ideally not in the Indian team, get a 37 ball 68, next 41 ball 80, but that's what I mean. But Prithvi doesn't play for himself. Prithvi doesn't waste balls. Right. He gets on with it. You know. ये 100%, वर्जन ऐसा है ना, या ये वर्जन ऐसा है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, अगर आपका लग नहीं रहा है, so you get on with it, and it will be, tomorrow is for me is a battle between discipline and class. Class. 100%, that's well sum up. But कौशिक, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रशांत चोपड़ा, अंकुश बैंस रन नहीं बना रहे। हिमाचल के मेजोरिटी ऑफ रन सारे उनके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर बैट से आ रहे हैं। तो प्रशांत चोपड़ा और अंकुश बैंस को अभी रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई जैसे साइड के अगेंस्ट अगर आप चेस कर रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। आपको सेटअप करना पड़ेगा कि कितने रन है, कितने रन उन्होंने लगाए हैं बोर्ड पे। बट अगर पहले बैट करती है, क्योंकि हमने लास्ट मैच में भी देखा था हिमाचल ने टॉस जीत के बल्लेबाजी ली थी, तो वो बैटिंग कितना इंपॉर्टेंट होगा उन दोनों का अच्छे स्टार्ट देना। लास्ट मैच में अगर हम देखें, अंकुश बैंस ने 19 गेंदें खेली थी, 16 रन बनाए थे। प्रशांत चोपड़ा ने 15 गेंदें खेली थी, 17 रन बनाए थे। तो ऐसा भी नहीं है कि वो आ रहे और 5 ओवर में मैच वो 50-60 का वो रन लगा के फिर आउट हो जा रहे, वैसा भी नहीं। जस्ट ऑन दैट, तो पहले 113 84, उसके बाद 28 बिकॉज राणा ने इम्पैक्ट प्ले आउट हो गया। उसके बाद देखो कहाँ जीते हैं, 204 स्ट्राइक रेट, 172 स्ट्राइक रेट, 110, 168, 175। ये 100, ये जो 204, 172, 188, 175, इसने मेकअप कर दिया वो तीनों का। अगर ये 160, 204, 172 नहीं होके 150, 130, 120, 110 होता तो वो मेकअप नहीं होता। मेकअप नहीं होता, राइट। हाँ, राइट। सो मेकअप होने का हर दिन नहीं होगा ये। हर दिन नहीं होगा। That's how Tamil Nadu also struggle, ना? SRK. Yeah. तमिलनाडु इस साल शाहरुख खान के बैट में बॉल नहीं लगा, they nowhere, they haven't qualified. And last year they were lost one game, वो फंसा हुआ विकेट में, गीला विकेट में टॉस हार गया था गोवा के साथ। 10 ओवर में they were 42 for 5, बैट में बॉल नहीं लगा। That was there in Lucknow. सुबह 9 बजे का गेम था। You know, that is when BCCI has done a great thing by
BCCI has done a great thing by making it 11 o'clock in 1:30, 4:30 game. Hmm. Because Hmm. उधर क्या हो Hmm. रहा था लखनऊ में, Bengal were playing in Guwahati, match was at 8:30. 8:30 in Guwahati in November, you win the toss, you win the match. Absolutely Toss the खत्म. boss. दिखता So कुछ नहीं है लेकिन it's a great तो initiative. It's a great initiative Uh-huh. by BCCI to have the games at 11 o'clock because that's evened out the pitch. The moisture is yes gone. The covers are off at 9 o'clock. 2 hours the sun is baking. Because ये Hmm. 50 ओवर 20 ओवर के गेम में ना अगर किसी को आप 4 ओवर के एडवांटेज दे दो तो खत्म है. Hmm. It's too much. Right. In fact, Right. in that Vijay Hazare final also in Jaipur, it was a 9 o'clock start, and Hmm. Tamil Nadu lost the toss to Himachal. Himachal put them in, and they were after 10 overs 37, and they ended up getting 270 odd because of Dinesh Karthik's 100. But अगर वो Hmm. pitch सुबह पहले 10 ओवर भी सूखा होता, 270 would have been 320. Right. तो टॉस वन डे गेम में टॉस का कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए as far as the pitch is concerned. नहीं सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल Even 100% even even conditions over 40 overs, 100 overs, may the better team win. Mhm. It's your skill set and your application of the skill set which will win you the right. game. Right. Nothing, no 100%. added advantage in the weather, in the pitch, in this, in that. नहीं, वो 5 day वाला गेम है, वो अलग है. Hmm. हाँ राइट राइट पर कौशिक, हिमाचल प्रदेश की बॉलिंग, वैभव अरोड़ा, ऋषि धवन ने पिछले मैच में भी 3 विकेट निकाले थे. इवन अभिनय सिंह जो केडी सिंह है वो भी आके अब विकेट निकाल रहे हैं, उनके हाइट का यूज कर रहे हैं. बंगाल के अगेंस्ट जबरदस्त हाँ बॉलिंग केडी परफॉर्मेंस थी सिंह ने एक सेमीफाइनल टाइम में. में 2.4 ओवर्स में 8 रन दिया था. क्या डाल रहा था वो? हाँ हाँ, yes yes he was ईडन excellent, गार्डन्स he में was excellent. ईडन गार्डन्स में 2.4 में 8 अगेंस्ट पंजाब is unthinkable. ऋषि धवन was 2 overs 6 runs 1 wicket. वही चेंज कर गया वही वही दैट चीज ओनली दे इक्वेशन को बहुत डिफिकल्ट कर दिया क्या बाद में. होता है suddenly 7.4 now has become a 9.4 game हाँ in 3 overs राइट because इधर दो छक्के जैसे फटक से नीचे भी करता है, दो क्वाइट ओवर्स फटक से ऊपर भी करता है because गेम छोटा है ना. राइट. बट कौशिक, जॉयदा, आप दोनों से पूछता हूँ कि आप देखते हो इस हिमाचल प्रदेश की बॉलिंग लाइनअप में, यहाँ पे आपके पास वैभव अरोड़ा आपको अर्ली इन स्विंगर आउट स्विंगर देते हैं, ऋषि धवन के पास कंसिस्टेंसी है, एक लाइन पे वो हिट करते जाते हैं, केडी सिंह फिर आके अपना हाइट यूज करते हैं, फिर मयंक डागर का स्पिन बॉलिंग, पंकज जायसवाल भी है, आकाश वशिष्ठ को भी हमने लास्ट मैच में बॉल करते करते हुए देखा, एक ही ओवर में उन्होंने विकेट भी निकाला. तो क्या आप देखते हो इस बॉलिंग लाइनअप को मुंबई के अगेंस्ट, आपके जहाँ पे इतने स्टार स्टडेड लाइनअप है, रहाणे भी आ चुके हैं, उनके अगेंस्ट डैमेज कर सकते हैं, क्या अर्ली डैमेज दे सकते हैं? कौशिक बताओ. हाँ दे तो सकते हैं क्योंकि ईडन गार्डन है. ईडन गार्डन में वी नो हाउ द पेसर्स गेट जॉयस है ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे बट आई एक्सपेक्ट वैभव अरोड़ा टू गेट दो मूवमेंट क्योंकि लास्ट मैच में भी हमने देखा ये इवनिंग गेम है. देश पांडे को भी मूवमेंट मिल रहा था, मैंने देखा था. अच्छा, ये कब शुरू हो रही है गेम? 4:30. 4:30 सर. ओह, इवनिंग गेम. सो 4:30 सर. या सो जो मिडिल ओवर्स में डाल रहे थे देश पांडे, वहां पे भी बॉल हिल रहा था. वहां पे भी वहां पे सीम भी हो बॉल रहा हिल था. राइट. हाँ वहां पे भी बॉल हिल रहा था. तो ये हिलेगा तो वैभव अरोड़ा शुड बी रेडी फॉर, मतलब वो अभी तक वो स्पेल आया नहीं है पूरे टूर्नामेंट में. वो हाँ आ सकता है फाइनल के दिन एंड इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेल अगर वो डिलीवर करते हैं. एंड ऑफ कोर्स द पेस ऑफ अभिनय, देन ऋषि धवन का कंसिस्टेंसी, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का यूज करे एंड कंडीशंस के अगेंस्ट टैकल करे क्योंकि मुंबई, हाँ मुंबई का है फायर पावर, स्टार स्टडेड टीम है बट इट्स ऑलवेज द बॉलर्स हु विन द गेम. बट जॉयदा, आई मीन पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, शिवम दुबे, उसके बाद शम्स मुलानी कैन बैट, अमन खान कैन बैट, इवन तुषार देशपांडे कैन यूज द लॉन्ग हैंडल एज वेल. इसके अगेंस्ट इफ यू आर इन द बॉलिंग टीम्स डगआउट, इन द बॉलिंग टीम्स कोचिंग स्टाफ, व्हाट वुड यू से टू द बॉलर? आपके पास स्विंग बॉलर्स भी है, पेस भी है, कंसिस्टेंसी भी है, स्पिन भी है, आप बॉलर्स को क्या बोलोगे? कैसे आप ऐसे ऐसे प्लेयर्स जो कि लाइक पृथ्वी शॉ अगर 6 ओवर बल्लेबाजी करते हैं वो मैच निकाल देंगे आपके सामने से, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो आप क्या बोलोगे उनको? आज का वीडियो एनालिसिस में ना इन सब का डिसमिसल दिखाया गया है. इन द लास्ट 20 T20 डिसमिसल जो होता है, हमारा जो टीम मीटिंग होता है, उसमें एक दिखाया जाता है स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ डालना है, कहाँ. एक दिखाया जाता है डिसमिसल्स और एक दिखाया जाता है अनकंफर्टेबल एरियाज. ओके.
So for every batsman, it differs. That's the job of a bowling coach, and there are notes being taken, and there are notes that are followed. So as soon as Shreyash comes to bat, somebody will go and tell the final leg fielder कि ये plan था. In case the captain is not muddled because he's thinking of so many players at the same time. Right. Right. And they also know that with these players, they have never won the T20. And in 1983 World Cup also, the West Indians had a plan for every Indian player, and the Indians had a plan for West. So it's about execution of your plans. Right. If otherwise, always the stronger team wins. That's why I said they will stick to the discipline. Now, sometimes beyond discipline, अगर किसी ने आके blinder खेला, जैसे उस दिन शुभमन खेला, तो then Himachal will get blown away. Right. But if you're not at your best, they will hurt you. And that is what they can do. Right. So their graph doesn't go much up and down. Punjab, I've always said that, with this team, they've never been title contenders because they have good days and bad days. And the real best teams in the history of any sport have good days and okay days. Any sport. You can't have bad teams. Yeah, bad days if you're a top side. You look at West Indies back in the day, look at Australia in the 90s and 2000s, you can't. An individual sport, you look at a Federer, you look at a Tiger Woods, they don't have bad days. They have okay days and they have very good days. So if it's an okay day, then it's anybody's game. If it's a good day for Mumbai, then they'll blow Himachal away. But Himachal will only have good days and okay days. So now it's about very good and okay. But they hover between okay and very good. They never drop. True. But we've seen Bombay drop. We've seen Bombay drop. Himachal doesn't drop. They've set a standard for themselves and they stay there. Right. And they won crunch games. First two games rained off. I met Rishi, who I've known for a while. And he said, Joy sir, kaise hain? Okay. Yaar, wo to chale gaye, ab dekhte kya hota hai. And then they won every game, just lost. And they topped the group, then came here, then won the quarterfinal, won the semi-final. Quietly, they get the job done. आपस में वो जो हडल में रहते ना, उनके अंदर एक कॉलड्रम में एक बहुत ज़्यादा confidence and not overconfidence, just confidence and hard miles वाला confidence, कि मेहनती वाला confidence. एक होता है यार मैं इंडिया के लिए यार चलेगा ये क्या खेलेगा. एक होता है यार और एक बार भाई लोग और एक बार. जो करते रहे और एक बार. Keep pushing. That's it. Just do what you can. Because what Mumbai can, Himachal can't. They don't have that firepower. लेकिन हम अपने करते फिर देखते क्या होगा. Because इनके ग्राफ ऐसे ही चलते हैं. मुंबई के ग्राफ ऐसे चलता है. अभी किस में कल आएंगे देखना पड़ेगा. If Prithvi Shaw bats for 12 overs game, if Prithvi Shaw comes in bats for 14 overs, game over. Joyda Prithvi Shaw, I have a question for you here. From Miku Jha, do you guys think Prithvi Shaw should change his approach a little bit in the middle overs? Because selection criteria is based towards runs rather than strike rate. He's asking in relation to his recent India call-up. That's a great question. See, I would put it this way that I would like him to be a little more consistent. Now, how he does that is his problem. Maybe this is the answer to getting consistent. Because we've seen the greats and, since he opens, you will always try and model yourself on a David Warner, on a Shikhar Dhawan. And how do they play? The greats of T20 cricket. How do they play? Now, you're not Chris Gayle. You're not. Right. You're not. Your game is not built on that platform. Okay. So what you can do is, if after 6 overs you are batting 40 of 24 balls, so can the next phase be another 25 ball 35? And then in the end, can you put a 10 ball 25? All this is adding up to a 55 ball 90. But he might want to say that I want it to be 200 strike rate from all through. That way, the day I play, I don't need anybody else with me. Now, only question there is, and the answer that we need is, how often is it happening? So if it's happening twice in 5 games, I'm all for it, because I've got 2 games तो अकेला जीता रहा है और बाकी आप सब मिला के 3 जीता दो. But if it's happening twice in 10 games, then it's then you rethink it. And ultimately, the answer lies with Prithvi. I think that's still happening with the IPL career, I guess.
कि वो आईपीएल स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे से करते हैं, देन फिर ही फेड ऑफ हो गेट, जाते हैं। हाँ थोड़ा I डिसअपियर was हो जाते हैं। I I was baffled that Delhi let Shikhar Dhawan go. यस हमने इन्हें बैंकर कहते हैं, बैंकर। डेविड हम्म, वार्नर, शिखर धवन, ये बाद में मिल गया डेविड वार्नर, दूसरा बात है, लेकिन आई एम सेइंग हम्म, टू लेट अ इंडियन प्लेयर गो, इंडियन प्लेयर इज गोल्ड, यू नो, बिकॉज फॉरेन प्लेयर तो चार ही खेल सकते हैं। हाँ इंडियन प्लेयर, आपके पास एक दादा इंडियन प्लेयर है और आप उसको छोड़ दे रहे हो। आई वाज वेरी वेरी सरप्राइज बिकॉज यू नो 600 अभी अभी लास्ट 3 years 1600 runs every year 550 runs। क्रेजी आपका तो क्रेजी कंसिस्टेंसी वाइज 35 ही 40 डन मैच। 35-40% रन तो टीम का ये बना देता, उसको छोड़ दोगे तो ला रहे हो किसको? वार्नर आ गया, बट वो तो गारंटी नहीं था ना वार्नर। मतलब सरप्राइजिंगली वार्नर के पीछे ज्यादा कोई भागे नहीं, वरना वार्नर भी 10 करोड़ प्लस ही जाता। बट That also, बट you know, I think we are looking too much into age and fitness. हाँ यस Between Shikhar Dhawan and Prithvi, don't need a rocket scientist to know who's better in fitness. Age को गोली मारो, एब्सोल्युटली यस हाँ, age से क्या करना है? सही बात पृथ्वी है, इज अ सही बात है। फैंटास्टिक प्लेयर, पृथ्वी इज अ गेम चेंजिंग प्लेयर। जिस दिन उसका थोड़ा फर्मा फिट हो जाएगा, अभी ना वो बैठ रहा है लेकिन थोड़ा सा वो ग्रूव पे नहीं बैठ रहा है, जिस दिन ऐसे बैठ जाएगा ना एकदम, उस दिन तो भगवान बचाए। हिमाचल की टीम अभी प्लेयर्स दे रही होगी कि वो फर्मा कल ना बैठे। हाँ नहीं, वो सोच रहे भैया हम तो अपना काम करेंगे, अगर किसी ने आके हाँ 40 बॉल में 100 कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो अपना जो कर रहे हैं वही करेंगे। हमें तो कोई चांस ही नहीं दिया था इधर तक हम पहुंचेंगे। कोई नहीं बिल्कुल बोला था, सबका डिस्कशन होता है, ये जाएंगे वो जाएंगे, पंजाब में और 9 आईपीएल प्लेयर है, हम लोग तो इधर लटक लटक के पहुंच गए। ऐसे तो विजय हजारे भी हम्म जीते थे, चलो कल देखते हैं क्या होता है। हम्म सो सही बात है, देव को सही नथिंग बात टू लूज, नो प्रेशर, नथिंग सही यस बात, नथिंग टू लूज यस नथिंग टू नथिंग टू लूज। लूज। एंड कौशिक, आई दैट लाइक योर brings टी me to शर्ट। my थैंक यू मैन सिटी Joydeep is also Man City fan, so we are three Man City fans here in I this am not panel. I आई हैव am टू not a टेल यू fan, वन, I like this jersey I am a आई Real हैव Madrid fan रियल मैड्रिड। अरे इंग्लैंड में yes किसका फैन हो? इंग्लैंड में I like to see Arsenal nowadays I am मतलब चेंज होते अच्छा, रहता है। जो नंबर वन है उसका, नहीं 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 Arsenal is इसलिए तुम playing नाउअडेज beautiful बोला। नहीं नहीं Arsenal is playing beautiful हाँ in this season so चलो good। Matter of days when they come down. Anyway, this is going into the Premier League section. हम लोग क्रिकेट पे वापस आते हैं। कौशिक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ। विनील रेड्डी का क्वेश्चन है, व्हाई इज हार्दिक तोमोरे नॉट इन मुंबई's playing 11? We saw Sarfaraz Khan is keeping the wickets for the last two matches. A surprise बस वही perhaps? वही, और एक बैट्समैन लेके जगह नहीं, किसको ड्रॉप हाँ करोगे? आप बोलो किसको if ड्रॉप करोगे, मेरा उल्टा हाँ क्वेश्चन है, किसको ड्रॉप करोगे इस टीम से? Very tough call, very tough call. वेरी टफ कॉल एंड सरफराज अगर वो कीप कर सकते हैं देन ही वाइड बिकॉज बॉल वी में हाँ कोई भी टीम कीप decently, कर सकता है। decently. आप हाँ हाँ आप decently. कौशिक आप कर सकते हो, शुभन आप कर सकते हो। 120 हम्म, बॉल में तो शायद 15-18 बॉल आएंगे कीपर से, हम्म, 2 कैच आएंगे और 30-35 थ्रो आएंगे, बस हो गया कम। हम्म. आई वाज कीपर ओनली ओह सी, बट कौशिक, हार्दिक तमोरे पॉसिबल इम्पैक्ट प्लेयर टुमारो, क्योंकि स्ट्रोक प्लेयर है, अच्छा खेल सकते हैं, पॉसिबल है? नहीं आई डोंट सी हिम अहेड ऑफ साइराज पाटिल को यूज किया था उस दिन एंड हाँ ही डिलीवर्ड हाँ इट वाज नॉट मतलब वो नहीं बट ही इज स्ट्रोक प्लेयर ब्रिलियंट स्ट्रोक प्लेयर जस्ट वो एक्सपीरियंस की जरूरत है मेरे ख्याल से वो नॉक करके मतलब ये स्ट्राइक रोटेट करने का मतलब डॉट बॉल थोड़ा ज्यादा था बट ही मतलब कवर अप कर लिया विद दोस बाउंड्रीज एंड सिक्सेस बट सी ही इज गोइंग तमोरेनो टू विल बी आल्सो गेट अ चांस, कल श्रेयस अय्यर चलेगी इंडिया खेलने के लिए, पृथ्वी चलेगा इंडिया हाँ, खेलने के लिए, इनको जगह मिल जाएगा। अभी आदित्य विजय तारे, हजारे में ही मिलेगा जब दीज गाइस गो टू बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड। यस आदित्य तारे इतने सारे मैचेस खेले हुए हैं, उसको मिल मोहम्मद जाएगा अली, हाँ वो तो आ जाएगा, लेकिन जब आ आएगा जाएगा तब जगह बना लो। बॉम्बे मुंबई में कुछ फ्री हम्म, में मिलता नहीं क्रिकेट में, आपको जगह जब आएगा, मौका आएगा, बना लो। फिर जैसे आपने मौका बनाया बट डेज क्रिकेट में, वैसे आपका मौका आएगा, बना हम्म, लो, फिर दूसरा कोई बैठेगा, आप नहीं बैठेंगे। But tomorrow, I guess Sairaj Patil will get श्योरली ये impact सरफराजी player. मुंबई टीम में चांस नहीं मिलता था, यूपी चला गया था, फिर वापस आया, अभी देखो क्या कर रहे हैं। और चलो पर बहुत मौका अच्छे ना, से प्लेयर और बहुत अच्छे से प्लेयर बैठे हैं अंडर 25 के जैसे एग्जैक्टली। दफेदार एंड ऑल दिस गाइज डिजर्व टू प्ले फॉर द टी20 साइड ऑफ मुंबई बट दफेदार किसको पे एक बिठाओगे क्वेश्चन भी आया है। दफेदार पे मैं उसी के इसी लाइन पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। खिजार दफेदार इन प्लेस ऑफ अजिंक्य रहाणे फॉर मी इन T20, पॉसिबल फ्रॉम नेक्स्ट सीजन परहैप्स?
हाँ, बिकॉज़ लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था वो जो स्टेट ए लिस्ट ए का ट्रॉफी हुआ था 50 ओवर का जो अंडर हम्म 25 हुआ था, हम्म वहाँ पे दाफेदार देन मनोज भंडागे ऑफ कर्नाटका, दीज गाइस वर वेरी हिटिंग वेरी, मतलब बहुत लंबे-लंबे छक्के मार रहे थे, बहुत अच्छे-अच्छे इनिंग्स खेल रहे थे। एंड आई हम्म हैव फॉलोड हिम इन द टाइम शील्ड गेम्स एज़ वेल, जो वहाँ का हम्म वो जो लोकल बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं मुंबई के जो अवेलेबल है हम लोग को डाटा, फॉर्च्यूनेटली हम लोग के हम्म पास अवेलेबल होता है You know, मुंबई I met क्रिकेट। Salil Ankola in the Dilip Trophy final in Coimbatore, and he was raving about Aman from Bombay. वो अमन उस अमन टाइम में खान। खेला नहीं था, and he was saying that he's a game-changing player, and we saw that some of the hits that he had. अभी अभी जोयदा उसी लाइन पे वी हैव अनदर क्वेश्चन, डू यू थिंक अमन हकीम खान एंड शिवम दुबे कैन बी गेम चेंजर्स फॉर मुंबई इन द फाइनल? 100%, 100%, 100%. See, उनके पास जो गेम है ना, वो गेम चेंज करने वाला ही गेम है. अभी ये कल होगा या पर इवन मुंबई मुंबई अमन खान को फटका ओपन पे उतार देती है, उतारा भी था शायद प्री क्वार्टर्स में या लास्ट लीग गेम में। okay, but he's the sort of guy who's a free stroking player. He can bowl. He's good on the field. He's a strong kid. He has all the attributes of going to become a fantastic T20 player. उसका कल उसकी जिंदगी बदल सकता है. कल उसने जाके 17 बॉल में 40 कर दिया और 4 टीम उसको ऑक्शन में उसके पीछे भागेंगे. उसका उसका आउट स्विंगर इज वेरी डेंजरस, वेरी चलो डेंजरस। वो आई भी आगे, मतलब वो भी दो काम में साल आगे. दो दो साल पहले मैंने देखा था, एक तो नीतीश कुमार रेड्डी जो आई थिंक आंध्रा के है, उनका वो टो क्रशिंग वो अंदर आता है, अभी आरसीबी का ट्रायल में उनको बुलाया था मेरे को जितना पता है। सो दिस टू प्लेयर्स कैन स्विंग द बॉल रियली वेल। एंड ऐसे अमन इज विद मीडियम पेसर केकेआर हु एज कैन वेल। बैट, मीडियम पेसर हु कैन बैट, इसका जो वैल्यू है ना आईपीएल में बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है. है। बहुत ज्यादा, मिलता नहीं उतना. बहुत सी ज्यादा। ऑल ऑफ देम आर फॉरेन प्लेयर्स, मीडियम पेसर हु कैन बैट. राइट हमारे एक हार्दिक है, राइट। पर बाकी अब देखो है नहीं हमारे पास. आई एम टॉकिंग अबाउट डिसेंट पेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाँ 120-22 वाला. सी हाँ ऋषि हाँ इज आल्सो मोर ऑफ अ बॉलर इन द आईपीएल. आई एम टॉकिंग अबाउट in 60-40 वाला, in either way. हाँ We have 80-20 वाला, 80 bowler 20 batsman, ये 80 batsman 20 bowler. मैं बोल रहा हूँ 55 batsman 45 bowler, या 55 bowler 45 batsman. ये बहुत कम है हमारे पास. बहुत कम। जोयदा बंगाल से किसी को स्काउट कीजिए, लेफ्ट आर्म पेसर शाबाज अहमद मोल्ड का, जो कि बैटिंग भी कर सके, ऐसे मैचेस जिता सके, लेफ्ट आर्म पेसर, मतलब ऑलराउंडर, स्पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। या यू नो, ऋतिक सी रॉय चौधरी है, बट हिज नी है blew अभी up as you रवि. said. No, Ravi is doing really well. Ravi has played under हाँ 19 India. He's done well. He's right. won your World Cup. He's come. हम्म, But ये जो अंडर 19 से सीनियर क्रिकेट का जो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है. हाँ, right. वो कभी कभी होता है ना, अब दिल्ली या बॉम्बे में लैंड करो, टर्मिनल चेंज करना पड़ता है, वही वाला. हम्म, right. But he's इसी very पे good. इसी हाँ I was talking to Lakshminathan Shukla. He's bringing the ball in. He's quick. He's sharp. He's good on the field. He's strong. Great attitude. जो होना चाहिए सब उसके पास है. बिल्कुल। और ऐसे ही आप ईशान पोरेल जैसे बॉलर को आप बाहर नहीं बिठाते, ईशान अगर पोल का आपके तो पास चिकन रवि। पॉक्स हो गया बेचारा, नहीं तो वो बाहर नहीं होता. हाँ He was down with chicken pox. रवि So he's रवि कुमार का एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। व्हेन द दैट स्क्वाड अगेंस्ट बांग्लादेश जो हुआ था, ट्राई सीरीज जो ईडन गार्डन में हुआ था अंडर 19 का लास्ट ईयर, तो वहां पे रवि कुमार सिलेक्ट नहीं हुए थे एक भी टीम में। सो ही वाज गोइंग टू प्ले कुछ बिहार, वो फ्लाइट पे वो स्टोरी वोरी दे रहे थे इंस्टाग्राम में। देन आई वाज लाइक इन ट्विटर कि रवि कुमार को क्यों नहीं ले रहे, इज अ लेफ्ट आर्म। देन अनफॉर्चुनेटली समवन गॉट इंजर्ड एंड रवि कुमार आ गए स्क्वाड में। And I think the NCA coaches got involved in that season only. उससे पहले involved नहीं हाँ थे हाँ NCA के जो I coaches थे। remember this distinctly because I got a call from Ranodip Bose, who's one of the selectors from East Zone, and he called me and told me that Joyda, we need to get Ravi Kumar. Can you organize it? And I was director of cricket, so I organized Ravi Kumar reaching Kolkata because they were somewhere else. So I remember this call sheet distinctly. हाँ, so He was वो not in the सब original. He was not in the original not 15 or 18 or whatever, but then he no came in. Yeah, he was close to it. So 30 which 30 is था, why, ओरिजिनल yeah, he 30। was in the reserves, which is why he was called. But यार मैदान में अगर घुस के कुछ करना है तो वो 11 में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो 12 से 18 में कुछ हो नहीं सकता. He got only one मौका, game sir। सभी मौका का इंतजार में रहता है. वही वो वही एक ही मैं बोल गेम रहा मिला, हूँ कल. क्योंकि एक ही गेम मिला था, वो ईडन गार्डन में बारिश हो गया था ना सब गेम। एक ही जी गेम मिला था, वो हाँ फाइनल गेम। हाँ. वो फाइनल गेम में जो विकेट लिया, एंड आई थिंक एनसीए के कोचेस ने देखा कि वो क्या कर सकता है बंदा And इन also these boys spend a lot of time at the NCA in Bangalore, which is where I am. So I can't say there, but here. So they know that is, I think, where VVS Lakshman and his team has done a great job. Their duty is to get the next line ready, whether it's under 19, whether it's senior, whether it's 18. तो लेफ्ट आर्म स्पिनर सीमर हमारे ये है, इसके रिप्लेसमेंट ये है, इसके रिप्लेसमेंट ये है.
लेफ्ट आर्म स्पिनर में जडेजा है, फिर अक्सर है, फिर शाहबाज है, फिर कुणाल पांड्या है. आई एम जस्ट सेइंग, सो टू नो, इसका बुखार हो गया, उसका पैर टूट गया, फिर क्या करोगे? So that is, and they're doing a fantastic job. Yep. Yep. अभी मैं एनसीए इसी गया पे था, मैंने I'll take. देखा, yeah, Yeah, just to yeah, finish up, I yeah. went to NC Ah, the yeah, other yeah. day. So I saw people, who are, in the Indian team, just out of the Indian team. I saw, people like, just out Ravindra of the Jadeja Indian. is also there, I guess. Yeah, he's there. He's just gone back, but there are people like, Vijay Shankar also, who's played for India Ah, before. He's ah, recovering. He missed the Syed Mushtaq Ali, waiting for Vijay yeah, Hazare. yeah. So a lot of the players are doing their rehab here. It's good to see, And Mhm. this is an open forum for all India players. They come, they get treatment over here, and they go back. Absolutely. And I'll take the last final question for this session. Tanush Kotian, I'll come to Mumbai spinner Tanush Kotian. How do you see his development, and how do you take him as a T20 bowler? I don't believe he can. Uh, yeah, I don't believe he can be in the Indian lineup in the next 3 years. What do you think about his T20 career? No, I Tanush think he's a Kotian and fantastic. Shams Mulani. Huh. No, I think Two spinners from Mumbai. Shams Mulani is a fantastic cricketer. He's got 50 wickets in Ranji Trophy. He gets runs. Captain of the under-25, won them the under-25 tournament. The national tournament. Yeah. So Shams Mulani is slightly ahead of Kotian because I think Shams Mulani's played a little longer. He's captain Experience. Mumbai. So Yeah. he's in a little bit of a, he's ahead in the pecking order. But as far as Kotian Mhm. is concerned, I'm very happy because we're very short of off spinners. We have Mhm. Ashwin, then we have Krishna Pagotham, Jalas Saxena. I think the selectors are looking beyond him, so he's not there in the fray. I don't see too many off spinners. So it's good to see a Tanush Kotian, because Akshay Wakhade is also about 33, 34 from Vidarbha. So who's the next off spinner? So it's good to see that. I Shaukin can't is think of any. Shaukin Sorry? another young. Shaukin another Yeah, young. Shokiri is not playing That's it. every version. Tanush Kotian is playing Yeah. every version for his Yes, team. yes. To play for Yeah. India, you just can't play one version. When you're Mm. The young, similar age he's coming. yeah, but what I'm saying is that you got to play T20, Vijay Hazare, and Ranji Trophy for the whole course. season to make your presence felt. If he shocking just plays off Syed Mushtaq Ali goes away, so Syed Mushtaq Ali for Delhi is over. So we will see Shaukin again next year in Syed Mushtaq Ali. But Mm. if you have a Kotian who's playing the Syed Mushtaq Ali, 7 days later playing the Vijay Hazare, Vijay Dhawan. 7 days after Vijay Hazare playing the Ranji Trophy for 2.5 months, then he's more on your face and his chances of Mm. perform become better because he's playing for 6 to 8 months. Right, right, 100%. And Guys, it's time to Shield games guys. himself. टाइम शीट तो खेलते ही रहेंगे मुंबई के प्लेयर्स हैरी शील्ड ये सब बहुत खेलते हैं कांगा लीग भी अभी चालू हुआ है फिर से तो I just want to short one. Time Shield में ही ये performance करके देश पांडे came back in Mumbai team. राइट So अभी देश पांडे is third highest wicket taker and उस दिन बॉल हिला भी रहे थे. So yeah. तो मजा आने वाला है but my final two questions before I wrap up, Joyda, your key battle, what do you think, which battle will define this match? I mean, there are, of course, so many good, talented players, but if I have to ask you and Kaushik one each, then what would it be? The Mumbai openers versus the Himachal fast bowling attack. If they get off to a flying, Vaibhav Rishi Dhawan, yeah. Rishi Dhawan If versus if they are Prithvi. if they are 5 overs 68 no loss, game's over. Right, Yes. 100%. Kaushik, your take? Same. I was thinking this only because it's all about the Mumbai batting unit, which is so मतलब power pack, so star-studded. If you don't get early wickets, it's never going to happen. हो सकता है बहुत ही miracles हुए हैं. Cricket is an unpredictable game, but this is how we can say जो हमारे basis पे होता है, हमारे control पे होता है. Openers को out करना is very important. Yeah, absolutely. And my final question, it's prediction time. Both the teams are first timers in the Syed Mushtaq Ali T20 final. Who is taking this trophy home? Joyda, I'll start with you. Mumbai 51. Mumbai 51. Mumbai 51. That's a close call, that means. Just on the firepower of the team. I can't imagine that 5 guys all getting cold on the final day. I can't imagine. Somebody will blow hot. But 51-49. 51-49. That's a close call. And Kaushik, yours? या सेम मुंबई क्योंकि वो बैटिंग को बीट करना बहुत ही हार्ड बिकॉज तनुष कोटियान इज कमिंग टू बैट एट 7 डाउन 8 डाउन हु हैज प्लेड कपल ऑफ मींस बहुत ही हाई प्रेशर में रणजी के 2 ऐसे नॉक्स खेले हैं
when the Tanush Kotian question came, so वो clutch mindset वाला जो word हम use करते हैं term, Tanush Kotian Hmm. being such a young player, he can do anything. So Tanush Kotian अगर इतना नीचे खेल रहे हैं तो ऊपर का क्या करेंगे? The firepower is insane. That Mumbai firepower is insane. क्योंकि final है तो I'll add another question. I'll put you guys on the spot. Your prediction for the player of the match in the final. Kaushik, you go first. I will go Kaushik, you for go. Shreyas Iyer. Shreyas Iyer. Joyda? I'm going with Prithvi for tomorrow. Oh, Prithvi Shaw. So then we are going to witness some firepowers from the Mumbai batting unit. एक ने पृथ्वी शॉ, एक ने चुना है अपने हिमाचल Shreyas मुंबई Iyer. के प्लेयर्स को, श्रेयस अय्यर को. बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे बायस हो जाता हूँ. मैं चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश जीते, फिर से इनका सक्सेस कंटिन्यू हो. No, एंड आई फील I want Himachal to win because I think it'll do wonders. Mumbai, या have won Ranji 41 times. But the question you asked me is, who are you expecting to win? Is what I said. या One is या heart, one या is head. Two different हाँ things. हाँ या I think KD Singh will make a difference with the ball Chalo. tomorrow. I think देखते हैं देखते We हैं. will know in 24 hours time from now. Yes. We'll know in 24 hour times, and we'll come back and review the final as well. क्योंकि अच्छा match होगा. We are expecting a good match. And thank you Joyda for joining. Thank you Thank you. Kaushik for Thank you. joining. And it has been a great session. Keep watching Domestic Adda. Keep following Rev Sports on our social media platforms: YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. सब जगह है हम लोग. So drop a subscribe there. And thank you for watching. Thank you. Thank you. I think end it. एनीवे जब एंड नहीं हुआ है तो कौशिक आई एड यू एक फाइनल क्वेश्चन ले ही लेते हैं. इम्पैक्ट प्लेयर में से कौन कौन आएगा? Impact player I already mentioned वो short video में वो हम्म I guess Siraj Patel should come in. अगर वो जो हम लोगों ने बात की कि openers versus the हाँ fast bowlers वो अगर हो गया हम्म, then also you can have Siraj Patel, then you have Shreyas Iyer, Dubey, वो middle order वो और extend कर सकते हैं. Already इतना लंबा है और ज़्यादा extend कर सकते हैं. So Siraj Patel is one and उस साइड में निखिल गांगता और आई थिंक एकांत सेन नाम का भी एक बैट्समैन है जो हिमाचल से खेल रहा है. सो एनी वन ऑफ द पेसर्स जैसे केडी सिंह हो गया उनको रिप्लेस करके इनको ला सकते हैं या फिर वी हैव सीन प्रशांत चोपड़ा आल्सो बीइंग रिप्लेस्ड बाय हाँ सम मिडल ऑर्डर बैटर्स. सो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन उनको भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनकी बैटिंग में फायर पावर मतलब है मतलब थोड़ा कम है. मतलब दे विल नीड अ बैटिंग अगेंस्ट दिस मुंबई से. हम्म मजा आने वाला है. बट कौशिक थैंक यू. थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टी हो गया था हमारे बैकएंड से, इसीलिए ये लाइव टाइमली एड नहीं हो पाया. बट हाँ, हमने एक फाइनल क्वेश्चन ऐड कर लिया. हमें सब्स्टिट्यूट्स का पता चल गया कि कौन इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं. कौशिक हैज गिवन हिज टेक. सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग डोमेस्टिक इंडिया. टाइम टू एंड दिस वन. थैंक यू.